आज का वर्ड है सॉवरेंटी। सॉवरेंटी सॉवरेंटी का अर्थ है संप्रभुता, साम्राज्य, प्रभुसत्ता, प्रभुता, प्रधानता, आधिपत्य। यानी यह वह शक्ति है जिसके अंतर्गत कोई राज्य अपने क्षेत्र, नागरिकों और शासन व्यवस्था पर पूर्ण अधिकार रखता है और किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं होता। लेट्स अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। Sovereignty refers to the supreme and absolute authority of a state to govern itself. It means that a state has the final power to make laws, take decisions, and control its internal and external affairs without being controlled by any other authority. Let's understand through some examples. First example is sovereignty is the supreme power of the state. Sovereignty is the supreme power of the state. संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। Second example is even if the government changes, the sovereignty of the country remains intact. Even if the government changes, the sovereignty of the country remains intact. सरकार बदलने पर भी देश की संप्रभुता बनी रहती है। Third example is because of sovereignty, no foreign power can interfere in the internal affairs of an independent country. Because of sovereignty, no foreign power can interfere in the internal affairs of an independent country. संप्रभुता के कारण कोई भी विदेशी शक्ति किसी स्वतंत्र देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। Fourth example is the authority of a government to rule over its citizens is called sovereignty. The authority of a government to rule over its citizens is called sovereignty. किसी देश की सरकार को अपने नागरिकों पर शासन करने का अधिकार संप्रभुता कहलाता है। Some synonyms are independence, supremacy, freedom, autonomy, self-rule. To know such words and to increase your vocabulary, please subscribe to my channel. Thank you.